Assalamu alaikum everyone. I hope you all had a great vacations and now we are back. So I'm Miss Faiza and I'll be teaching you social studies. So the first chapter is about peace and conflict. So let's think about what do you think about peace and conflict and what does it tell us about you? Peace किसको कहते हैं हम और conflict किसको कहते हैं हम? So let's find out first about few terms that are important in order to move forward with the chapter. So now let's learn about few terms first. So what is conflict? Conflict क्या होता है? Conflict could be anything. Conflict could be between you and your friend or between you and your sister or brother, or it could be between countries, it could be between cities, it could be between provinces, it could be between um, anyone. So why does conflict arises? That's the biggest question. So to give you the overview, let's give you an example. For example, that there are two friends. One likes arts and one likes maths, and they both decide that they're going to go to the same class. They're going to take a course, and they're going to take the same course, despite of whatever the course is about. वो जाएंगे सेम कोर्स लेंगे सेम क्लास में बैठेंगे अब now that they have decided it the first person is saying that I want to go and take an art class while the other one says no, I want to take a maths class. So here the conflict arises. So but through talking to one another they can come up with a solution, but conflict arises from choices. जो आप choices आपकी होती हैं उनसे conflict arise करता है, ठीक है, उसकी वजह से conflict होता है. कोई सही या गलत नहीं होता most of the time. Most of the time it's because of the choices that you have for your own self. Alright, it could be wrong as well. I'm not saying you're always right, but most of the time it's because of your choices in life. It could be wrong, but most of the time it's not wrong, it's not right. It's because you both are not on the same page. आप लोगों को अलग-अलग चीजें पसंद होती हैं, ठीक है. The second one is war. I know all of you are familiar with this word war. War could be between countries. There are a lot of types of wars. लेकिन हम जो इम्यून है वो है जो हमारे मुल्कों के बीच में जो वॉर्स होती हैं उसमें, ठीक है. जो मुल्कों के बीच में वॉर्स होती हैं उनको हम वॉर कहते हैं. इट कुड बी बिटवीन विद इन द कंट्री भी वॉर्स होती हैं. दोज आर कॉल्ड कोल्ड वॉर्स, जिसमें वेपनरी यूज नहीं होती, वन ऑन वन जंग नहीं होती, मगर वॉर हो रही होती है, ठीक है. जिस तरीके से हमारे नॉर्दर्न साइड पे हो रही थी वॉर, जहाँ पे तालिबान ने इन्वेड कर दिया था एंड ऑल, दैट वाज अ कोल्ड वॉर एज वेल, बट वी डोंट कंसिडर इट एज अ वॉर. ओके. पीस पीस मतलब जब जंग नहीं हो रही होती तो हम बोलते हैं उस पीरियड को पीस. Now let's look at what are the causes of the conflict. Conflict किस किस वजह से आता है? सबसे पहले organizational structure. Organizational structure मतलब कोई भी जगह का स्ट्रक्चर है. कहीं आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ की आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आपको उनकी सोच से या चीज़ों से या बहुत सारी जो एनवायरनमेंट है उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है. दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट. सही, उसकी वजह से आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, if I go to a school and for teaching and I don't like the environment, I don't like how they teach, so that is going to be an organizational structure because of which we are going to have a conflict. Number two is limited resources. Limited resources wala conflict we can limit it to countries या provinces. फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोविंस के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, या किसी मुल्क के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है और दूसरे मुल्क के पास इतना पैसा नहीं आ रहा और उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो पैसा बना सके, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. उनको लगता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है रिसोर्सेज की. नंबर थ्री है इंटरडिपेंडेंस. आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो भी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, बिकॉज द अदर पर्सन डज नॉट मे नॉट लाइक योर चॉइसेस. अगर आप बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर तो वो आपके लिए फैसले करेगा और आपको हो सकता है वो फैसले पसंद नहीं आए. द फोर्थ वन इज इनकम्पैटिबल गोल्स. इनकम्पैटिबल गोल्स में हम कोट कर सकते हैं इमरान खान को. ही ओवर प्रोमिस्ड
what he's going to give and he's unable to give what he promised to give, right? So उसने incompatible goals बना लिए. इनकम्पैटिबल गोल्स की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है विद इन द कंट्री, लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. जो उसको सपोर्ट करते थे अब उन्हें सपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ हिज इनकम्पैटिबल गोल्स. उसने बहुत ज़्यादा ऊंचे गोल्स बना लिए थे जिसको वो अचीव नहीं कर पा रहा है. The fourth one is personality differences. Personality differences is a very minute difference, minute cause of a conflict. It could be between you and your family. आपके आपके बहन भाइयों में से आपको कुछ और चीज़ पसंद हो, उसको कुछ और चीज़ पसंद हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ मी एंड माई ब्रदर गोज आउट, आई वॉन्ट टू हैव अ पिज्जा एंड ही वॉन्ट्स टू हैव अ बर्गर, सो दैट इज अ पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट. वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज. ओके, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ चॉइसेस, बट पर्सनैलिटी एज एन इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई किसी को बातें करने का बहुत शौक होता है और किसी को बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं होता, एंड बोथ ऑफ देम आर ओके इन देयर ओन वेज. आप बातें करें ना करें, इट डज नॉट मैटर, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक कि बातें नहीं करते तो बुरी बात है कोई. इट्स जस्ट your personality. So both the people have different personalities and that may also cause a conflict. बिकॉज आपको लग रहा है कि ये बहुत मीन है या बहुत बदतमीज है या बहुत रूड है, बट द अदर पर्सन इज जस्ट not very talkative. That's it. Okay, so the last one is communication problem. That is the most problematic cause of conflict. जब आप अपनी बात नहीं समझा पाते और आपको दूसरों की बात समझ नहीं आती, इस वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज कम्युनिकेशन problems. So I would like you all to work on this. If you ever have faced this in your life, you must always try to communicate your problems properly so the other person is able to understand what are you going through, what are you suffering from, so that your problems could be resolved. Otherwise अगर आप communicate सही नहीं करेंगे, अपना मसला बताएंगे नहीं, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा. जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. ओके, so now let's look at how we can resolve the issues or the conflicts. So सबसे पहले क्या बात होनी चाहिए, हमें awareness होनी चाहिए. We should know that there is a conflict, there is a problem, there is a conflict. जब हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, self preparation करेंगे. Self preparation as in we are going to think कि हाँ ये problem है and how we can overcome it, or how we can cater this problem. Then we are going to conflict reduction में आएंगे. conflict reduction में क्या करेंगे हम, we are going to try to resolve the conflict. हम सोचेंगे किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है. अब इसमें आ जाता है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन के थ्रू कर सकते हैं. नेगोशिएशन में आप उस बंदे से बात करेंगे जिससे भी प्रॉब्लम होगा. कंट्रीज में भी आपस में, इफ टू कंट्रीज हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, दे गो थ्रू अ फेज वेयर दे टॉक. आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, उसमें लोग बोलते हैं यहाँ दौरे पे गए, वहाँ दौरे पे गए, आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दौरे पे गए हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में. So sometimes they go for negotiation for certain things and they negotiate. वहाँ compromises होने पर होते हैं और इसके बाद एक दोनों पार्टीज जो हैं एक सिंगल टर्म पे आती हैं और उसमें आके वो एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं. सो एग्रीमेंट कुड बी थ्रू नेगोशिएशन और इट कुड बी बिकॉज फॉर योर वैल्यूज वेयर यू डू नॉट, आप जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो अपनी वैल्यूज आगे रखें एंड देन यू कम अप विद एन एग्रीमेंट. So I hope you understood something about it. I know it's a little difficult, but it's a very interesting chapter. I hope you understood the basic terms clearly. I'll see you all in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care of yourselves and your family.